Hello again and welcome back to another session of commerce class with me Suman Rathore. Students, first of all I would like to thank all of you for liking my previous video on business studies sample question paper. And in that video I have received lots of comments requesting to make more videos on case study based questions. So here I am making this series which will cover case study based question from all the 6 chapters of business studies term 2. And I hope this series will prove to be very helpful in your exam preparation. So let's start with our first chapter, which is staffing. And here our very first question is, our assets walk out of the door each evening. We have to make sure that they come back the next morning. This function relates to which function of management? Give any 2 points highlighting the importance of this function. And this question carries 3 marks. So यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फंक्शन है एंड देन उस फंक्शन के एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस लिख देने हैं. So here we are talking about the main asset of the business, which is manpower, and of course the employee attrition rate, because it is very common for a business that employees join and leave the firm all the time. But we have to make sure that we have right number of people to carry on the business operations smoothly all the time. So ये हम कौन से फंक्शन से इंश्योर करते हैं? ये हम इंश्योर करते हैं स्टाफिंग फंक्शन से, by putting the right person at right place and at the right time, right? और फिर हमें कोई भी 2 पॉइंट स्टाफिंग के बता देने, लाइक फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, सेकेंड आप लिख सकते हैं हायर परफॉर्मेंस, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं. और ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन रेडी. Now our second question is, Fonda Limited is setting up a new plant in India for manufacturing auto components. India has highly competitive and cost-effective production base in this sector. Fonda Limited is planning to capture about 40% of the market share in India and also export to the tune of at least $5 million in about 2 years of its planned operations. To achieve these targets, it requires a highly trained and motivated workforce. You have been retained by the company to advise it in this matter. Now part 1 of the question says which source of recruitment the company should rely upon, and second, which methods of training and development should company initiate. And this question carries 5 marks. So of course आपको ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर लिखना है इस क्वेश्चन के लिए, और सबसे पहले इसमें आपको सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाई करना है. एंड हियर Fonda Limited is a foreign company. It is a multinational company who is planning to set up a plant in India. तो obviously ये सारे employees को उस particular foreign company से यहाँ इंडिया में transfer तो नहीं कर सकते. So they have to make appointment or recruitment of some Indians. So here they have to choose external source of recruitment, जहाँ पे कि आप बाहर से नए employees को अपनी company में लेते हो, चाहे वो आपकी खुद की कंट्री के हों या फिर किसी फॉरेन कंट्री के हों, बट यू आर टेकिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड योर ओन कंपनी, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एंड देन एक्सप्लेन इट इन 1 or 2 लाइन. देन लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट, which method of training and development should company initiate? So here as they are talking about a particular skilled job where the employees will have to make some auto components. So as it is a skill trade where the person or the employees will learn under the guidance of an expert person that how to make auto components. So we can say that they can choose apprenticeship training, or they can choose internship training where the employee or the worker works under the guidance of an expert, and उसके बाद जब उसको theoretical and practical knowledge दोनों होती है with some fresh idea relating to that particular locality, तो फिर आप उसको अपनी कंपनी में for that particular position appoint कर सकते हैं. And then third आप लिख सकते हैं vestibule training, because here you have to train a large number of people at the same time, right? और क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर मशीन, एक सोफिस्टिकेटेड मशीन को हैंडल करने की बात हो रही है फॉर मेकिंग द ऑटो कंपोनेंट्स, सो इसलिए भी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन.
इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे इन 1 और 2 लाइन, एंड देन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रेनिंग like apprenticeship training, internship training, and vestibule training. Okay? Now our next question is, Blue Heavens Limited purchased a new high-tech machine from Germany for manufacturing high-quality auto components in a cost-effective manner. But during the production process, the manager observed that the quality of production was not as per standards. On investigation, it was found that there was lack of knowledge among employees for using these high-tech machines. So frequent visit of engineers was required from Germany. This resulted in high overhead charges. Obviously, अगर आप बार बार जर्मनी से इंजीनियर्स को बुला रहे हो एम्प्लॉयज को सिखाने के लिए कि हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर मशीनरी, तो कंपनी की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है. Now, suggest what can be done to develop the skills and abilities of employees, and also state how the employees and the organization will benefit from your suggestion. And this question carries 5 marks. So here, first of all, you have to suggest a way that how to develop the skills and abilities of the employees. और वो कैसे होगा? By providing training to the employees. Because training is the process by which the knowledge, skills, abilities and aptitudes of employees are increased for performing a particular job. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ट्रेनिंग, एंड अगेन उसको 2 या 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है. देन इट सेज हाउ ऑल्सो स्टेट हाउ द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल बेनिफिट फ्रॉम योर सजेशन. तो यहाँ पे हमने उनको सजेशन क्या दिया? ट्रेनिंग. अब हमें ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है टू द एम्प्लॉयज एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so any 2 points of importance of training to the employees, and then again any 2 points of importance of training to the organization आपको explain करके लिख देना है. और ये हो गया आपका next question भी ready. Now our fourth question is, Venta Enterprises is a company manufacturing water purifiers. The company has a functional structure with 4 main functions: production, marketing, finance, and human resource. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. Identify and explain the concept which will help the human resource manager in deciding the actual number of persons required in each department. And this question carries 3 marks. तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है, जस्ट इन 2 और 3 लाइन्स में आपको कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करके और उसको एक्सप्लेन कर देना है. So let's discuss the answer now, because here they are talking about deciding the actual number of person required in each department. So here we are talking about which concept? Workforce analysis or workload analysis? Right, here we are talking about workload analysis, because here we are talking about determining the number and type of person required in each department. और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है? वेयर वी डिटरमाइन द एक्चुअल नंबर ऑफ आवर एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और आवर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है वर्कलोड एनालिसिस. अगेन 2 या 3 लाइंस में आपको वर्कलोड एनालिसिस को एक्सप्लेन करके लिख देना है. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस. एंड ये है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन. सिंपली आपको मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाई करना है, सो इट विल बी वेरी इजी. सो लेट्स जस्ट डू इट इन सेकेंड्स. ओके, सो फर्स्ट इज, अ कंपनी गेट्स एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ इवन विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वैकेंसी. हाउएवर, as and when the vacancy arises, the company makes use of such applications. Obviously, here we are talking about external source of recruitment, पर कौन सा है उसमें भी? इट इज कैजुअल कॉलर्स, जहाँ पे कि कंपनी को ऑन एंड ऑफ बेसिस पे एप्लीकेशंस मिलते रहते हैं, और जब भी वैकेंसी होती है कंपनी चेक्स इट्स डेटाबेस एंड ट्राई टू फिल द पोजीशन बाय इनवाइटिंग दोज पीपल ऑन फॉर इंटरव्यू एंड ऑल दैट. ओके, नाउ सेकेंड इज कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स when there is a rush of order or when some permanent workers are absent. So here we are talking about direct recruitment, क्योंकि यहाँ पे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स की बात हो रही है. सो कंपनीज या एंटरप्राइजेस क्या करते हैं? फैक्ट्रीज मोस्टली
अपने गेट पे ही एक नोटिस लगा देते हैं स्पेसिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, और फिर उसके बाद जो डेली वर्कर्स होते हैं वो उनको देखते हैं, एंड इफ इट सूट्स देम एंड टू द कंपनी तो वो उस दिन काम करते हैं और उनको डेली बेसिस पे वेजेस पे की जाती हैं, राइट? Now, a third is recruitment, by which most of the senior positions of the industry as well as commerce are filled. So, here we are talking about advertisement sources, जिसमें कि कंपनी के पास एक फ्लड ऑफ एप्लीकेशंस आ जाता है टू चूज फ्रॉम, और उसमें से ही कंपनी अपना प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉय है उसको चूज कर लेती हैं, राइट? Now our sixth question is, Ashish, the marketing head, and Krishna, the human resource manager of Eureka Enterprises, decided to leave the company. The CEO called Krishna and requested her to fill the vacancies before leaving the organization. Informing that her subordinate, Miss Karina, is very competent and trustworthy, Krishna suggested that if she could be moved up in the hierarchy. And for marketing head's vacancy, database of unsolicited applications lying in the office can be checked. Identify the two sources of recruitment suggested by Krishna and differentiate between them. So यहाँ पे कृष्णा जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, शी इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आशीष जो कि मार्केटिंग हेड है वो भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सीईओ ने कृष्णा को कॉल किया, उसे बोला कि भैया तुम जाने से पहले हमारे लिए जो 2 वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं उन दोनों को फिल करके जाओ, तो उसके लिए तुम बताओ क्या सजेस्ट करती। सो हियर कृष्णा सजेस्टेड दैट मिस करीना जो कि उसकी सबऑर्डिनेट है एंड ऑल्सो जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्दी है, उसको हायरार्की में हायर पोजीशन पे लाके वैकेंसी को फिल कर लिया जाए। यहाँ पे क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन की बात हो रही है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की, जो कि है हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड वैकेंसी जो कि हमारी मार्केटिंग हेड की वैकेंसी, और उसके लिए कृष्णा सजेस्टेड दैट कि हमारे डेटाबेस में जो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस हैं उनको चेक किया जाए, एप्लीकेंट्स को कॉल किया जाए, इंटरव्यू एंड ऑल दोज फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए और फिर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाए, राइट? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं या फिर हम किसी को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट से, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि किसी को बाहर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेके आया जाए, नए पर्सन को, नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया जाए, राइट? तो ये हमारे हो गए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन केस ऑफ दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन केस ऑफ मार्केटिंग हेड। आपने आइडेंटिफाई कर लिए दोनों, उसके बाद आपको डिफरेंसेस बताने हैं, तो उसमें आप एनी 4 डिफरेंसेस बता दीजिए और आपका ये 5 मार्क्स क्वेश्चन हो जाता है रेडी। That's all for today, and in our next session we'll discuss case study based questions from the chapter controlling. Until then, stay in tune and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you and goodbye for now.